Thanksgiving Day Gentleman by O. Henry. O. Henry's real name is William Sidney Porter. He is known for his endings, which are filled with surprises and twists. O. Henry की स्टोरीज में एक आश्चर्यजनक मोड़ होता है स्टोरी के एंड पर. O. Henry often sets his stories in New York City. To Thanksgiving Day Gentlemen is a short story that appears in O. Henry's 1907 collection, The Trimmed Lamp. The story is laden with irony, humor, and has a surprise or a twisty ending. In this story, O. Henry satirizes, that is, makes fun of the tradition of Thanksgiving. O. Henry अपनी स्टोरी में ह्यूमर दिखाते हैं, एक सरप्राइज एंडिंग है उनकी स्टोरी में, और वो थैंक्सगिविंग डे ट्रेडिशन के बारे में मजाक उड़ाते हैं इस स्टोरी में. O. Henry comments that Thanksgiving Day is the one day of the year that is purely American. O. Henry also states that the history of the holiday is not so much important for the people, but that traditions are a big part of Thanksgiving. O. Henry इस स्टोरी के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि लोगों के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए थैंक्सगिविंग डे की क्या हिस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ट्रेडिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. According to the old tradition, Americans eat a large bird called turkey on the first Thanksgiving Day. O. Henry writes, "It's a strange thing. There are rich people who wish to help the poor, but many of them seem to think that the poor are hungry only on Thanksgiving Day." O. Henry इस कहानी के द्वारा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि यह बहुत अजीब बात है कि रिच पीपल पुअर पीपल की हेल्प तो करना चाहते हैं, पर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पुअर पीपल सिर्फ थैंक्सगिविंग डे पर ही भूखे होते हैं. The story is about Stuffy Pete, a poor man who lived in New York City. Pete's Thanksgiving Day tradition for the past 9 years was to wait on a park bench in the Union Square at 1 in the afternoon. Story Stuffy Pete के बारे में है, जो कि एक poor man है और न्यूयॉर्क सिटी में रहता है. पीट पिछले 9 साल से यूनियन स्क्वायर, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है, उसकी एक पार्क की बेंच पर बैठता है हर थैंक्सगिविंग डे पर दोपहर के 1 बजे. Every year the same old gentleman came along and bought Pete a large Thanksgiving dinner, and it seems that he was very much concerned with creating a tradition than with actually feeding the poor Pete. हर साल एक ओल्ड जेंटलमैन पीट को लार्ज, बहुत बड़ा थैंक्सगिविंग डिनर देता था, और ऐसा लगता है कि उसको बस इसी चीज की चिंता थी कि वो ट्रेडिशन कैसे बनाए रखे कि वो हर साल थैंक्सगिविंग डे पर पीट को खाना खिला पाए. The old gentleman was thin and tall and was 60 years old. He wore eyeglasses and was dressed in black. His hair was whiter and thinner than it had been last year. His legs did not seem as strong as they had seemed the year before. On those other Thanksgiving days, Pete had been hungry, but today Pete was not hungry. He had come from a dinner so big that he had almost no power to move.
आज थैंक्सगिविंग डे पर पीट बिल्कुल भूखा नहीं था। पहले जब भी थैंक्सगिविंग डे होता था पीट बहुत भूखा होता था, पर आज बिल्कुल भूखा नहीं था। Pete had been passing a large house near the great broad street called Fifth Avenue. It was the home of two old ladies of an old family. These two old ladies had a deep love of traditions. इन दो old ladies को tradition से बहुत प्यार था और Thanksgiving Day tradition को बहुत ज़्यादा निभाना चाहती थी। Every year on Thanksgiving Day, these ladies at noon sent a servant who would wait by the door for the first poor person to walk by, and the ladies fed him dinner until he could eat no more. हर साल थैंक्सगिविंग डे पर ये लेडीज दोपहर में एक सर्वेंट को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा कर देती थी और किसी भी सबसे पहले उधर से जाने वाले पुअर पर्सन को वो पकड़कर ले आते थे और उनको इतना खाना खिलाती थी कि वो खाना खाने के बाद कुछ और ना खा सके। This year, Pete was that person who happened to pass by the mansion of these two old ladies on his way to the park. The servant took him in and fed him until he could eat no more. This way, tradition had been followed. इस साल पीट वो पर्सन था जो उनके घर के आगे से पास करा और ओल्ड लेडीज का सर्वेंट उसको अंदर ले गया और इतना खाना खिलाया कि वो चल फिर भी ना सके। इस प्रकार से उन दोनों ओल्ड लेडीज ने अपना ट्रेडिशन फॉलो करा, अपना ट्रेडिशन निभाया। So, when he arrived at his usual bench, he was already painfully full from a huge dinner. He was full to the point of sweating and being uncomfortable. So पीट जब अपने बेंच पे यूजुअल बेंच पे पहुंचा जहां वो हर साल थैंक्सगिविंग डे डिनर के लिए ओल्ड जेंटलमैन की वेट करता था, तो वो बहुत बुरी तरह से थका हुआ था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खाने में खाया था और वो पसीने आ रहे थे उसको और अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। After a few minutes, the old man arrived as usual and greeted Pete the way he always did. Pete didn't want to eat again, but he saw how happy the old man was that he could buy Pete dinner. So Pete told the old man that he was very hungry, and the two went to their usual restaurant. Pete ate another huge meal. पीट ने ओल्ड मैन से कहा कि वो बहुत भूखा है। वो अपने पुराने रेस्टोरेंट पे गए और पीट ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया। Pete had eaten far too much. On the way home, Pete collapsed from all the food he ate and was taken to the hospital. घर जाते समय पीट गिर पड़ा क्योंकि उसने इतना ज्यादा खाना खा लिया था और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। And an hour later, the old gentleman was brought to the same hospital, and the doctors put him on another bed and began to try to discover what his sickness could be. एक घंटे बाद ओल्ड जेंटलमैन भी उसी हॉस्पिटल में लाया गया और डॉक्टर चेक करने लगे कि वो किस वजह से बीमार था। One doctor told another that the old gentleman was there because he had not eaten anything for 3 days. Now look at the irony. Look at the twist in the end of the story. Old gentleman इसलिए हॉस्पिटल लाया गया क्योंकि उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। Here, O. Henry has created a highly ironic ending because what happens is the opposite from what you might expect. The old man has starved himself to buy Pete dinner as usual, and Pete didn't want to turn the old man down and hurt his feelings, had overstuffed himself. Thus, both of them ended up in the hospital. यहाँ इस स्टोरी में आपने देखा कि कैसे ओ हेनरी ने एक आयरॉनिक एंडिंग, एक मजाक वाली एंडिंग क्रिएट करी स्टोरी के एंड में,
जो आपने एक्सपेक्ट करा था कि कितना अच्छा है कि ओल्ड जेंटलमैन ने पीट को खाना खिलाया, पर उसका ऑपोजिट ही हुआ। ओल्ड जेंटलमैन 3 दिन से भूखा था, पर उसे ट्रेडिशन निभाना था, तो भी उसने पीट को खाना खिलाया। पीट ओल्ड जेंटलमैन को दुख नहीं देना चाहता था, पेट भरा हुआ था, फिर भी खाना खाया, और इस तरह से दोनों हॉस्पिटल में पहुंच गए। Wasn't the story interesting? Yes, it was. Thanks for watching the video, and do not forget to like, share, subscribe and hit the bell icon.